एंड फंक्शन से बाहर जो वैल्यू है दैट इज द के वैल्यू। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी है, इफ यू हैव वॉच्ड द रिकॉर्डिंग, तो उसके अंदर वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस वेरी वेल। तो गाइस, क्या ये बात सबको क्लियर है? Is this clear to everyone that how can we find out the vertex by completing square? So in the last class we did see this form. We did see this form. हमने ये फॉर्म देखी थी। सेम वही फॉर्म में अब हमने कन्वर्ट कर लिया है। बेटा नूर, आपको समझ आ गया है? नूर बेटा रिस्पॉन्ड करेंगे? ओके, so now look at this question. This becomes y minus 2. This becomes x plus 3 whole square. This becomes y is equals to x plus 3 whole square, or जो minus 2 है that will become plus 2. So from this we can take out h value. The h value is minus 3 and the k value is plus 2. Is that clear to everyone? Yes class, everybody must respond. Everyone is clear? So guys, please note down this completely, please. देखिए बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, हुजैफा? ये हमारे पास होल स्क्वायर फॉर्म होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो ये लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स ab and this is b square. It can be converted into a plus b whole square, right? तो ज़ैफा हम इसको लिख लेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट? बात समझ आई ज़ैफा? क्लियर है ज़ैफा? Completing a square is a universal method to find out the vertex of any curve. Basically, the midpoint method we can use for the curves which are intersecting x-axis, and it is an easier way. But what if the curve is not intersecting the x-axis? We cannot find it out by the easier method, so we have to go through the completing square. That's what I'm trying to explain you guys. So only y-intercept is 0. No, it's not about the y-intercept. Basically, we are calculating the x-intercepts. Got it? So I will show you. So let's say, can you see this graph is not cutting x-axis, right? Right? So if this graph is not cutting x-axis, yes, Hassan, do you agree? जी सर। So basically, this graph is not intersecting x-axis. So that's why we cannot use the midpoint method. Completing a square is a universal method to solve any question. Got it? जी सर। ओके, आगे चलते हैं। Okay, जी. Look at this question. They are asking us to convert the question into the given form. So first of all, I took 2 common. So let me solve this question for you guys separately. Okay, first of all, the completing square says that the coefficient of x square should be 1. Right now, the coefficient of x square is not 1. So I will divide the complete equation by 2.
Okay. Now, the negative 8 on the right hand side will come on the left hand side, and this will be x square plus 2x. So the method says the left hand side will be the same. Now, क्या करेंगे? The coefficient of x is 2. जो x की वैल्यू होती है, we half it and square it. तो 2 का हाफ 1 करेंगे और उसका स्क्वायर both sides add करेंगे. Is this clear to everyone? If anyone is unclear, please let me know. Okay, Huran, I will explain you again. The first step is clear to you, Huran? Sir, y is y over x. It's not x, it's y over 2. You are asking for this value, Uzafa. ये y over 2 लिखा है, x नहीं लिखा है बेटा. ठीक है उजाफा, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, सो हुरैन, पहला स्टेप क्लियर. ओके, द सेकंड स्टेप इज क्लियर टू यू, हुरैन? ओके, द थर्ड स्टेप इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2. जो भी x का कोएफिशिएंट होता है, हम उसको हाफ करते हैं. तो 2 का हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा. 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे. क्या ये बात समझ आ गई हुरैन? सो दिस बिकम्स y upon 2 plus 9, and the right hand side becomes x plus 1 whole square. X plus 1 whole square. Is that clear to everyone? Now, this 9 can go to the right hand side and it will be subtracted, and the division, the 2 which is being divided, it can go to the right hand side and will be multiplied to both. क्या ये बात सबको क्लियर है guys? Yes class, all of you are clear. If anyone having issue, please let me know now. Okay, to sketch this curve, Josefa beta, are you clear? Josefa beta, are you clear? X plus 1 whole square minus 9 shouldn't be right as two values of x. Sorry, I mean one value of x and one value of y. Josefa, आप क्या करें, मैं आपकी बात नहीं समझा बेटा. You can turn on your mic and ask me. सर ये जो लिखा है x प्लस वन होल स्केयर माइनस नाइन, इसे इस तरह ही लिख हम्म, सकते हैं x माइनस वन और y माइनस नाइन. नहीं ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, बिल्कुल भी अच्छा, नहीं लिख ओवर सकते. टू जो है, ओवर टू जो है ना. ओवर 2 जो है वो बेसिकली यहाँ डिवाइड हो रहा है, वो जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा. ओके, समझ आया. डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, नाउ वट एवर द वैल्यू जो x में से निकलती है, दैट शुड बी द h वैल्यू, दैट इज -1. और जो अलग से लिखी होती है, दैट इज द k वैल्यू, दैट इज -18. तो वी हैव द मिनिमम पॉइंट with us, that is -1 comma -18. Okay, so if I want to sketch it, it will be like this. So it will be like this. Got it? So what is the value here? How can I sketch it? Now basically
This value is like -1. This value is -18. And this value is -16. So how come -16? The constant value of the question. The y-intercept is basically the constant value of the question. Okay, so there is this formula, a times x. I suppose you should not use this formula. That's a derived formula. I should say you should avoid this formula. से क्या ग्राफ की स्केचिंग सबको क्लियर है गाइस? Yes, class. Everyone is clear with the sketch. Yes, Huran, if you have any problem, you can ask me. Heba Ali, are you clear? Please note it down. Okay. तो देखो बेसिकली आपको ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये मैंने दोबारा समझाना है पूरा. Yes, Huzafa, I can't hear you. ओके. देखो बेटा, हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट आया था वो आया था -1 और -18. सो मैंने बेसिकली क्या किया है, पहले मैंने बता देता हूँ क्या किया है. मैंने एक्सेस पहले ड्रॉ नहीं किया. मैंने पहले रैंडम कर्व ड्रॉ कर दिया. अब मुझे ये बात पता है कि मिनिमम पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -1, -18. मतलब x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -18 है. तो इसका मतलब है कि x और y एक्सेस अब मैंने ऐसे बनाने हैं कि मेरा जो मिनिमम पॉइंट है वो x इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू -18 पे दिखे. मुझे स्केचिंग दिखानी है, एग्जैक्ट वैल्यूज पे प्लॉट नहीं करना. तो देखो यहाँ तक की बात समझ आ गई आपको? यस हुजैफा, क्या ये बात आपको समझ आ गई? इफ नॉट देन आस्क मी अगेन. यस, बट शुडंट द लाइन टच वाई -1? नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं. जो हमारा वर्टेक्स पॉइंट है ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं. ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू -18 है. मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. 2x² + 4x. ओके लिसन. 2x² + 4x + 16 -16, सॉरी. अब आप ये देखो हमारा जो कर्व है इसके इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो -1 और -18 है. अब बात समझ आई आपको जफा? यस जफा, यू क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? किसी को एक्सप्लेनेशन की दोबारा जरूरत तो नहीं है? Should I move on to the next question? Okay. Okay, guys, use the completing square method and solve this question right now. तो हमारे पास वो बच्चे जो ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो +8 है यहाँ आके -8 हो जाएगा. दिस शुड बी x² - 6x. बेटा उसके बाद हमने क्या करना है? दिस -8 एज इट इज. दिस x² - 6x. 6 का हाफ 3. 3 का स्क्वायर 3 square on both sides, right? 3 square on both sides. This becomes y + 1. This becomes x - 3 also.
This becomes x minus 3 whole square plus 1. All of you are clear till now? Yes, class. So the h value is 3 and the k value is 1. So it means the minimum point, yes, the minimum point or the vertex point is 3, 1. So it means it should be like this. So this should be 3, should be 1, and this should be 8. All of you are clear, bacho? Sir, won't it become -1 when you shift to the other side? My bad. I'm sorry. I'm really sorry. So this becomes -1. So h value is 3 and k value is -1. So it will be a curve like this. The h value is 3. It's like this. And the k value is -1. So basically, this is -1 and this is +3. And this value is 8. All of you are clear about the function, the graph? Okay, Josefa is asking something. Sir, shouldn't it be -3 times 2 makes it -6? I mean -3 square. या -3 का स्क्वायर करें तो भी +9 आता है. ओके, और हमारे पास आशना ने क्या पूछा है? सर वाई आरंट वी टेकिंग रूट्स? वो मेथड भी कर सकते हैं आशना, वो मेथड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि ये फैक्टराइजेबल है, हम कर सकते हैं. बट इन द क्वेश्चन दे आस्क अस टू यूज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अस टू यूज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ओके, now they are asking the values of, let's say, a and b. Let's say they are asking these two values, that is p and q. So what are they asking? These values lies on x-axis. So for x-axis, we put y is equals to 0. Listen, we will put y is equals to 0. We will put the value of y is equals to 0. हम क्या कर रहे हैं? y की complete value को 0 से equal कर रहे हैं. सरवर साहब, ग्राफ तक का काम आपको समझ आ गया है? जी सर. अभी नूर समझ आ गया. मरियम लतीफुद्दीन, हुज़ैफा, आर यू क्लियर गाइस? हिबा अली, दानिया, अयान. ओके, so now I can write x minus 3 whole square equals to 1. So to remove the square, I will put a root, and the root of 1 will be plus -1. I will use +1. I will use -1. And I will get two different values of x. Is that clear to you guys? So the negative value is on the graph. It should be +2, sorry. So the smaller value, by looking at the graph, but the smaller value will be p and the greater value is q. Yes, class, everyone is clear? If anyone is having issue, please ask me.